that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8, kinds of pronouns. Okay, let us start now this chapter. A pronoun is a word used in place of noun. Pronoun होते हैं जो noun की जगह पर यूज किए जाते हैं. For example, Harry reads in my school. Harry कहाँ पढ़ता है? मेरे स्कूल में पढ़ता है. Harry is in his school. Harry उसकी स्कूल में पढ़ता है. Okay. Now the most important pronouns are I, my, me, we, our, us, you, your, he, his, him, she, her, it, they, their, them, who, whose, whom, which, what, that. Okay, that's called our pronouns word. The following pronouns are the main classes of pronouns. Number first है personal pronoun. Personal pronouns are used in place of noun. जो noun की जगह पर place किए जाते हैं, that name persons. They are used for the personal speaking. जो मुख्य रूप से विशेष रूप से बोले जाते हैं या फिर spoken to और spoken of. They are divided into 3 persons. Number first है first person. फर्स्ट पर्सन है, इट रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग. जब व्यक्ति के बारे में बातें की जाती है या व्यक्ति द्वारा बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल है आई और वी. ठीक है. सेकेंड पर्सन होता है इट रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है. सिंगुलर प्लूरल्स में भी यू का ही यूज किया जाता है. ओके. थर्ड पर्सन, it denotes the person or thing spoken of. जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन. एग्जांपल है सिंगुलर फॉर मेल में आता है ही और सिंगुलर का फॉर फीमेल में आता है शी. उसी तरह प्लूरल में आता है यूज करने में आता है दे. ओके. नॉट डू नॉट यूज एनी नाउन जस्ट आफ्टर माइन, अवर्स, योर्स, hers and theirs. The apostrophe should not be used with them. They are also. वो कह रहे हैं जब नाउन हमारा माइन, वर्ड, योर्स, हर्स, देयर्स पर टिका हो तो उसमें apostrophe का यूज नहीं होता. They are also classified separately as possessive pronoun. तो वह possessive pronoun के थ्रू अलग किया जा सकता है. My, our, yours, his, her, its, their are separately classified as possessive adjectives as nouns are used just after them. Next है reflexive and emphatic pronoun. जैसे they are myself, प्लूरल होगा हमारा ourself. उसी तरह yourself से प्लूरल होगा yourself, सिंगुलर है हमारा himself या हर सेल्फ या इट सेल्फ तो हमारा होगा देम सेल्व्स. ओके. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिनोट्स द कमिंग बैक ऑफ एन एक्शन अपॉन द डोर्स. यहाँ तक कि जब वापस से घूमकर सब्जेक्ट पर आकर बात रुक जाती है उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जांपल है ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई. नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन आर द सिंपल यूज्ड फॉर एम्फासिस. For example, he did it himself. Next is demonstrative pronoun. They point out some object or things. For example, this, that, these, those, etc. Next is interrogative pronoun. When interrogative word, जब interrogative जो हमारे शब्द होते हैं like who, whose, whom, which, what are used for asking questions. They are called interrogative pronoun. Okay. Next is relative pronoun. They are who, which, that and what. A relative pronoun relates to some words going before called the antecedent. Antecedent means going before. It also joins sentence or parts of sentences
like a conjunction. For example, the student who stood first is my son. Who क्या है यहाँ पर relative pronoun है, having its antecedent student. Okay. Next, not relative pronoun are the singular and the plural alike. Relative pronoun who may be masculine or feminine, that may be masculine and feminine, or neuter, which and what are generally neuter genders. Okay. Next are some uses of the relative pronoun who is used for persons. For example, the man who came here was a doctor, which is used for the lower animal and young children and things without life. For example, the dogs which was black, the books which is lost. Next is that is used for person and things. For example, the boy that played the game and the boy that I ever saw. Okay. Next is that is also used after the superlative degree of adjectives. For example, this is the tallest tree that I ever saw. Next is that is also used after two incidents, one requiring who and the other with the man and the cat that you made. Okay. Next, remember, it and its are called personal pronoun when they are used for some living things as little animals, children, etc. But when they are used for lifeless things, they are called impersonal pronoun. For example, it is a fine day, it is raining. Okay. Not a pronoun, it is generally used for things without life, for animals, for young children, and for time or weather. For example, I have a pen. तो I की जगह क्या यूज करेंगे? I have a pen. Pen के लिए यूज करेंगे it. It is red. He has a dog. It is black. The child was crying. Child के लिए यूज करेंगे it was very small. It is 9 o'clock. It was raining. Okay. Next, demonstrative and the interrogative words are called adjectives when they are the placed just before nouns. For example, जैसे एडजेक्टिव है, दूसरी तो प्रोनाउंस है, जैसे दिस बुक इज माइन, प्रोनाउंस बनता है हमारा दिस इज माय बुक. विच बुक इज योर्स, प्रोनाउन बनता है विच इज योर बुक. उसी तरह हुज पेन इज दिस, प्रोनाउन है हुज इज दिस पेन. ओके. नाउ किड्स, वी डू द एक्सरसाइज. Pick out the pronoun in the following story. This an old man at the point of death called his sons around him to give them some advice. He ordered his servant to bring a bundle of sticks. Okay. He and said to his eldest son, break it. The son strained and strained, but could not break it. Okay. The other sons also tried but could not do it. The older father then said, unite the bundle and each of you take a stick. When they had done so, then he then told them, now try it. And each stick was easily broken. Okay. Next one, put pronouns in the place of the nouns wherever you can in the following sentences. यहाँ पर shields क्या है? Noun है. Seals are usually killed when the seals की जगह यूज होगा are about 4 years old. तो लिखेंगे sheep.
are about 4 years old. Peter lived young until, Peter की जगह यूज होगा he. His brother returned. Priya thought, Priya ने सोचा that कि Priya, she had lost her money. The manager soon saw the manager's mistake, मतलब his mistakes. Okay kids, next underline the pronoun in the following sentence, write their kinds. His book was lost, so he used a was. So इसलिए यहाँ पर conjunction यूज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा his book was lost, so he used a was. तो a was ये हो गया हमारा reflexive pronoun. Okay, he prayed best, who loved best, ये हो गया हमारा emphasis pronoun. Okay, next है numbers, genders and cases of pronoun. Personal pronoun are of same number and the gender is the nouns for which they are used. Number first is masculine gender. Words that stand for males are masculine gender. For example, he, his, him. And next is feminine gender. Words are that stand for females are feminine gender. For example, she, her. The pronouns है हमारे I, my, me, you, your, we may be either masculine or feminine. The pronouns they and them may be masculine or feminine or neuter gender. Neuter gender है words that stand for things, time, weather, etc. are neuter gender. For example, it, they, them. The following are the various forms of the person pronouns. जैसे person है हमारा numbers में first person है singular के साथ I और plural के साथ we, और possessive है singular का my, mine, plural है ours. उसी तरह object है singular का me और plural है us. Next है second person का singular plural क्या है thou और you. तो singular का है दाई, दाइन और सिंगुलर का है थ्री. ऑब्जेक्टिव प्लूरल है यू, योर्स, प्लूरल है यू. उसी तरह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही, शी, इट. पॉसेसिव का सिंगुलर है हिज, हर्स, हर्स, इट्स और ऑब्जेक्टिव का सिंगुलर है हिम, हर, इट. थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे और पॉसेसिव का प्लूरल है देयर, देयर्स और ऑब्जेक्टिव है प्लूरल्स का देयर. ओके, my, our, thy, yours, his, her, it, their, thou. Derived from personal pronouns are classified separately as possessive adjectively. Not the place of the pronouns है. Second and first person you and I, not for I and you. Second and the third person you and he. Nouns और द थर्ड इन द फर्स्ट पर्सन है, जैसे नाउन हो गया कोई भी नाम, थर्ड पर्सन हो गया ही और फर्स्ट पर्सन हो गया आई. उसी तरह सेकंड पर्सन है यू, थर्ड है शी या ही, आई है आई. इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज बी इन सम पर्सनल प्रोनाउन इट शुड बी यूज्ड इन इट्स नॉमिनेटिव फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल, इट के साथ आई, it is he, it is she, it was they. Okay, now kids, we do the exercise. Pick out the pronoun in the following sentence, write their numbers and genders after each of them. it है थर्ड नंबर है, थर्ड पर्सन है और जेंडर कौन सा है उसका सिंगुलर. उसी तरह यू क्या है सेकंड पर्सन है और क्या है सिंगुलर है. दे क्या है
थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है। ओके, पिक आउट द pronoun in the following sentence and say what person each pronoun is. Tells us what they told their brothers. तो यहाँ पर है they, है ना? तो they हो गया हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल। फिर I asked him to go to his place. I क्या है हमारे पास? पहला है tells us what they told their brothers। तो us क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन का है। they और their हमारे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और ये हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल है। थर्ड पर्सन का क्या है? प्लूरल है और उसके बाद ये भी थर्ड पर्सन का प्लूरल का पॉजिटिव केस है। नेक्स्ट है ही इज, ही और हिज। ही क्या है हमारा? ही तो हमारा उसके बाद है आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद है हिम, क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है और फिर उसके बाद है हिज हमारा पॉजिटिव केस है। ओके, फिर है ही क्या है? ही हमारा थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है और हिज हमारा पॉजिटिव केस है। उसी तरह यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.